लोकसभा चुनाव में करारी हार के बाद एआईडीएफ में हलचल तेज हो गई है। मानकछार के विधायक अमीनुल इस्लाम ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। अमीनुल इस्लाम ने एआईडीएफ के महासचिव पद से इस्तीफा दे दिया। विधायक ने पार्टी के प्रमुख बदरुद्दीन अजमल को अपना त्याग पत्र भेजा है। अमीनुल इस्लाम ने पार्टी के संगठन, महासचिव और प्रवक्ता पद समेत सभी पदों से इस्तीफा दे दिया। तो लोकसभा चुनाव में जिस तरह से करारी हार झेलनी पड़ी एआईडीएफ को, उसके बाद पार्टी में हलचल तेज हो गई है। मानकछार के विधायक अमीनुल इस्लाम ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। अमीनुल इस्लाम ने एआईडीएफ के महासचिव पद से इस्तीफा दिया। उन्होंने पार्टी के प्रमुख बदरुद्दीन अजमल को अपना त्याग पत्र भेजा है। अमीनुल इस्लाम ने पार्टी के संगठन, महासचिव और प्रवक्ता पद समेत सभी पदों से इस्तीफा दे दिया। माने आमार सांगठनिक साधारण सम्पादक दलर एजन बहुत ही अनुभवी और गुरुत्वशील व्यक्ति और तेनेके करा बुली माने तेखेतर जी पद तेखेते स्पोक्समैन है, तेखेते सांगठनिक साधारण सम्पादक है दलर এই পদসমূহৰ পৰা ৰিজাইন কৰা বুলি মোৰ নলেজত এতিয়ালৈকে নাই। মই আপোনালোকে যেতিয়া কৈছে মই জানিম আৰু যদি সঁচাকৈ তেনেকৈ কিবা এটা হৈছে তেতিয়াহ'লে হয়তো এইটোই হ'ব যে তেখেতে সাংগঠনিক দায়িত্বত আছে। আমি ধুবুৰীত আমাৰ মাননীয় সভাপতিক লৈ যিটো পৰাজয় আমাৰ হ'ল গোটেইকেইটা সমষ্টিতে মানে বিধানসভা ছেগমেণ্টৰ কথা মই কৈছোঁ, গোটেইকেইটা সমষ্টিতে তেখেতৰ সমষ্টিটো বা আমাৰ সমষ্টিবিলাকতো বহুত কম ভোট আমি পাইছোঁ। কিহৰ কাৰণে পালোঁ? এই কাৰণে হয়তো নৈতিক দায়িত্ব তেখেতে যিহেতু বহুত এজন গুৰুত্বশীল ব্যক্তি আৰু তেখেতে অনুভৱী নেতা, বহুত হি সিৰিয়াছলি কাম কৰে তেখেতে যদি তেনেকৈ কৰিছে মই নাজানো। যদি তেনেকৈ কৰিছে এইটো হ'ব পাৰে যে মই মোৰ দায়িত্ব লৈ মোৰ পদবিলাকৰ পৰা ৰিজাইন কৰোঁ। নৈতিক দায়িত্বটো স্বীকাৰ কৰিবই লাগিব আমি। নিশ্চিতভাৱে পৰাজয় হৈছে, জনমত আমাৰ বিপক্ষে গৈছে, তাৰ বহু কাৰণ আছে, আমাৰ বহুত ভুল হৈছে। সেই ভুলসমূহ আমি ফাইণ্ড আউট কৰি শুধৰণি কৰি মানুহৰ মাজত যাব লাগে, তেনেকুৱা ধৰণৰে চিন্তা চৰ্চা চলি আছে।